Good morning, class. Welcome to the maths online class. So, dear student, as you all know, I am your maths teacher Juhe Singh, and take out your maths book, everyone. Okay, so you all have taken. So, in the previous class, student, I have started the problem set 8A, and up to question number 6, I have already completed. Now come to question number 7, and it is given on page number 117. So everyone take out page 117, okay? And also take out your maths book, notebook, okay? Now see here, in question number 7, convert into paise. Question 7, convert into paise, okay? Convert into paise. So here can you see the question? 12 rupees 12.08. Okay, so when you have to convert rupees into paise, then you have to multiply by 100. okay, जब आप किसी भी नंबर को मीन्स रुपीज को जब आप पैसे में कन्वर्ट करते हैं, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सो आपको क्या करना है? 12.08 इंटू 100 देन पैसे. ओके, यहाँ रुपीज हट जाएगा और यहाँ 100 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सो यहाँ पैसे आ जाएंगे. ओके स्टूडेंट, सो जब आप 12.08 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट है ये आपका हट जाएगा. ओके, ये जो डॉट है जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आई एम टेलिंग यू कि ये जो डॉट है वो रिमूव हो जाएगा. ओके, सो आंसर विल कम 12 मीन्स 1208 पैसे. ये आपका आंसर आएगा. ठीक है, ये जो डॉट है मैंने हटा दिया और 00 अगर होता तो ये डॉट 00 होता तो वो हट जाएगा. ठीक है, so answer is directly 1208. so do it. Now see one more question. B, rupees 64.00 is there. Okay, so you have to convert it into 6400 into 100. Then you have to write down paise. Okay, जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, देन यू आर गोइंग टू राइट डाउन 100. नाउ सी, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा तो इट विल कम 6400 पैसे. ओके, इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट एंड आई नो कि यू ऑल विल डू दिस वेरी वेल. ओके, सो डू इट इन योर कॉपी. ओके, कितना भी खत्म हुआ, मत करो, ये सुनो तुम्हारे क्लास का है. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू रुपीज एंड पैसे. ओके, so question number A, question number A is 267 पैसे. ओके, 267 पैसे इज देयर. सो आप 267 पैसे को डिवाइड करेंगे 100 से. ओके, then it will become what?
रुपीज और ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा. सो आंसर विल कम, यहाँ 2 डिजिट के बाद आपको डॉट लगाना है. जब आप 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट के बाद आपको डॉट लगाना होता है, और जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डॉट को आपको रिमूव करना होता है. तो यहाँ पे आपको डॉट लगाना होगा. देन इट विल कम 2.62 रुपीज, 2 rupees and 67 पैसे. It will come 2 rupees and 67 पैसे. ठीक है. Now see question number B. 362 पैसे, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है. Then 362 divided by 100. So answer will come rupees 3 means 3 rupees and 62 paise. So these are the answer of question number 7 and question number 8. And rest question you have to do by your own self. Okay. So आप खुद से करेंगे 7 and 8 का जो rest questions हैं that. Okay. Done? Okay, now come to question number 9. This question you have to do in your book. Okay, student? This question, do it in your book. Question number 9. See the question. Sorry. How do you make rupees 8,780 using the fewest notes and coins? So यहाँ already आपके notes, some notes are given and coins are given. So आपको 8,780 rupees बनाने हैं कम से कम rupees को लेकर. Okay? So see how you are going to do. You are going to make rupees 8,780. So see, so you have to take 4. You have to take 4 notes of 2,000 plus 7 notes of 100 plus 1 note of 50 plus 3 into 10. So it will become 8,000 plus 700 plus 50 plus 30. So आप जब इनको प्लस करेंगे तो it will come 8,700 50 plus 30 80 rupees. Okay. So these are the answer. Question number 10. How much money is there? So total money is, can you see how much money is there? So many notes are there. So you have to count by your own. Okay, आपको इसको खुद से count करके यहाँ पे answer write down करना है. Okay student? So I know you all will do. This you have to do in your book. A and B both.
Now come to question number 11. Question number 11. Look at these coins. So coins are there. See, coins are there. Okay, and you have to count all the coins. So let me see. 10 plus 10 plus 10, 30. 30 plus 2, 2 and 5 and 40, 41. So question number 11, total amount shows rupees 41. ठीक है, पिक्चर में जो अमाउंट है वो 41 है. नाउ विच ग्रुप शोज द सेम अमाउंट. यहाँ पे आपका ABC ग्रुप है एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच ग्रुप शोज द सेम अमाउंट. सो A, CA 10 10. See here student, here C is the answer. Okay, C will show the same amount. So many coins are there and you have to do by your own count the coins. Okay, it is given the pictures and I know you all will do this. Pictures are there and you have to count the coins and notes also. तो आप कर लोगे ये. Now question number 12. Complete the table. Now this I am doing. Complete the table. Okay, complete the table. Now here is पैसे and at down is rupees. Okay, okay, so here is 0.03, 5.50, 17 and here is 800. Okay, so these are the table and you have to complete this table. Okay, here you have to write down all paise and add down all rupees. Okay, so see on the board student. Now see rupees 3. So no rupees are there, no 3, sorry. Here is paise. So answer is 3 paise. ये 3 पैसे को रुपीस में जब आप कन्वर्ट करोगे तो 0.03 पैसे आएगा. ओके, now here is how many paise. Rupees is 550. तो पैसे 550 पैसे. Okay, here is rupees 17 means 1700 paise and here is 80.00 paise. Okay, so these are the answers, so do it. And at last question number 13. Question number 13, last one. Which is more? So total you have to count the money. 220, 23. 210. Now see here 13 A. A में आपका टोटल अमाउंट है 200,
plus rupees 1. So is equals to 223. 200 rupees 200 sorry 23. Now B, 100 plus 100 plus 10 plus 2 plus 2 plus 5 मीन्स प्लस 10 मैंने कर दिया, 5 है, तो इज इक्वल्स टू 200 10 20 22 रुपीज 223 नॉट 2 तो आपका ए जो है वो मोर है. ओके so do it fast student. Now your problem set 8A. Problem set 8A is completed today, and in the next class I will start problem set 8B. Okay, so do it fast. Okay, so you all have done this problem set 8 here. Okay, so till then student please keep practicing, and also you have to learn how to add the notes and coins. Okay, आपको ये learn करना है notes and coins. It is given in your book on this exercise, so please do it and complete up to problem set 8A. Okay, so till then keep practicing, keep learning. Bye.